Yes, I can. Hey, hi. Um, so I thought we'd start talking, and people will continue coming in, and of course, at some point, we'll start talking about what we decided to talk about. Hmm. Um, so first, brief introduction about myself, and then I'll give it to Megha also. Um, I'm Anand Rajgopal. I'm a director of operations at T-Works. T-Works is a this T-Works is a government of Telangana initiative, and we are setting up a large prototyping center in Hyderabad. And as part of this prototyping center, we are engaging with makers, artists, engineers, hobbyists, startups, and working with a lot of these folks to convert their idea into a product, like Jeet is doing as an entrepreneur, as an artist. And a background about this series is it's a series called Handmade in India. It's a play on Make in India, Made in India. When we talk about Make in India, it's more on the lines of manufacturing, large Hmm. scale, thousands of units. Handmade in India, on the other hand, is generally not mass manufactured, or not mass manufactured to the scale that we think about usually. And it involves a lot of creativity, and mostly every piece is unique. And again, that has parallels with what Jeet is doing. So far, we've spoken to blacksmiths, we've spoken to leather craftsmen, and today we'll be speaking with Jeet, who is a character creator, a prop maker, a art set creator. I think Jeet can talk a bit more about. That's the most difficult part about to label myself also, because how do I convey कि क्या करते हैं वो एक और एक. So yeah, I pretty much make any concept. I build any concept in real life. So most particular costumes and props, making fictional characters to you know giving a physical form to it. Maybe a prop, a gun, or a mask, or a superhero, or an alien, or an astronaut, or something like that. So that's the basic idea. So, Megha, sorry, I initially told Megha that we won't start the webinar for about 5 minutes, but गलती से शुरू कर दिया मैंने. No worries. We can get started. People will keep joining. There people are joining. Okay. They just joined a couple of them. Yeah. There are 21 of us now. I think we can get started. People will keep joining. ठीक है. So, some rules, guys, and girls. The first is if you have any questions. Okay. So we are starting off the webinar formally now. Sorry for a bit of delay. So Jeet is a character creator. He's a prop maker. He is a practical special effects kind of a person. So first I'll be showing some of the work he's done. He's got an amazing Instagram handle called the Iron Thread Studio that you can see here. And I don't know how many of you have watched the movie Minnal Murli. It's a very famous movie, at least, I mean, where I come from. And I'm assuming it's famous around here. This was the costume that Jeet made for the ad for Minnal Murli. Um, uh, can you tell us a bit about this, how this job came to you? So, as far as I know, this movie was made back in 2018 only, and I told that the entire production, everything was done, and because of COVID, they couldn't launch it in theaters or whatever the reason. And after COVID, they wanted to launch it, and that time their costume was fully wrecked for 2 years. The original costume in the movie was kept in some locker and it was full gone. So a new costume had to be made, and that's how I was contacted because of my previous work about superheroes, and they wanted this to be made in a week. And I was not told that this was going to be worn by the main actor.
I was Ah. told that it made to be worn by a stuntman. So since this is a bodysuit and bodysuit is stretchable, it was made for the stuntman, and the stuntman was a little leaner than this actor. And this Thomas, he was aged but quite bulky. Surprisingly, the costume fit him. And in the movie industry, right, everything depends on the director. Director का end time पे ना कुछ भी change कर सकता है वो. Director वैसा होता है कि उसको कुछ भी चीज पसंद नहीं आया वो change करा देगा, उसको कुछ अच्छा लगा तो वो लगा देगा. So he decided कि नहीं, this costume will be worn by the main guy only. And luckily my costume was fitting to him. So that's how he got to wear it. And basically it was for the YouTube ad. This is all the campaigning they did with Yuraj also. I haven't posted that ad. 2 ads are there. I have yet to. One is with this Khali and one is with Yuraj. So that's how this was. Then you have this one, right? Yes. For Candyman. It's a confectionery. It's a candy, yeah. And you also design the costume, or someone gives you the design and then you get started? It's completely made, like, this is a full original concept. Here the director and the whole team gave me full control as to कैसा आपको बनाना है. They only had the idea कि okay, we want one who is like, you know, थोड़ा जो girly है उनकी, she should look like a college teen or someone. The other dude should be like flamey, fiery something, and the last one has to be something related to storm and clouds, sort of more like Power Rangers. So the concept for drawing, the logos, everything, I was, you know, I made it for them. And based on the drawing, I made a lycra suit, and some armor elements are also there on the costume. और उस हिसाब से बनाया गया था. Yeah, it was pretty much done like that. And this is your second space suit that you made. This is my astronaut suit. That's You're inspired from the Interstellar movie astronaut suit. Basically made based on Interstellar movie. उसका जो look and feel है वही चाहिए था उनको, production को वही चाहिए था, तो वैसे ही बनाया, वैसे ही try किया. And that was made in about 1 month. 1 month लगा था हम लोग को. Actually it was बनना चाहिए था 10 to 15 days में, but there was a lot of directional changes and काफी कुछ changes हुए उसमें. And the reality is in the ad field, यहाँ पर these actors, they are not fixed. I mean, unless if they are the main star, उनको पता है कि हाँ अक्षय कुमार ही काम करना है. But यहाँ पर जब side role जो होते हैं, जो करते हो, तो यहाँ पर mostly they are not selected. Mostly, you know, a week back or 2 days, 3 days prior to the shoot. So no proper, you know, measurement was given. And since this astronaut suit, even the real one, they are not made for anyone. जो आदमी आपका बॉडी है ना, वो आपके लिए ही बनेगा. तो वैसे ही मुझे भी वैसे ही बनाना था, because it is not a stretchable suit नहीं है. तो एक measurement एक आदमी के हिसाब से ही बनेगा वो. And the girl who is wearing, she was 5'11". तो वो she was a fashion model, उसके हिसाब से हम लोग को बोला गया था she was 5'9", but she turned out to be 5'11". In fact, in the suit she's 6'3". In the suit she was towering the other 2 guys also. तो ये सब नहीं पता था हम लोग कि इतना changes होने वाला. Normally ऐसा नहीं होता. तो these also were the challenges कि हम लोग को फिर end time पे change करना पड़ा, थोड़ा sleeve बड़ा करना पड़ा, legs बड़े करने पड़े. And you had to be on the set to do all this? No. This was trials होते हैं. तो generally एक ट्रायल होता है. नॉर्मल कॉस्ट्यूमिंग में एक ट्रायल होता है, बट यहाँ पर आई टेल पीपल कि एक ट्रायल में नहीं होगा, एटलीस्ट 2 या 3 जाता है, बट 2 ट्रायल तो होता ही है. इसके पहले नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड कॉस्ट्यूम है. इसमें आपको एक ट्राई में बनेगा ही नहीं, मतलब चेंजेस करना पड़ता है. अनलेस इफ आई हैव फुल मेजरमेंट्स एंड प्रॉपर, यू नो, पता है कि वो पर्सन कौन है. यहाँ पर नहीं होता है पता, चेंज भी हो सकता है. Because the costume is not important, the actor is important. If they want another person और उसका body type अलग है, तो मुझे costume उसके लिए करना पड़ेगा. तो वो एक problem है, but वो manage करना पड़ता है फटाफट. So you've all the stuff that I've shown, at least whatever I could show without someone hacking my screen, you've done in the last 1 year, right? In the last 1 year, when I was cosplaying, I was only able to make 1 costume per year, which was for the competition.
dedicated for the competition. But in the past 1 year, I've made more than 27 costumes अभी तक, और अभी मैंने गिना नहीं है सर, अभी 2-3 और ऐड हो गए. इतने मैंने कभी सोचे भी नहीं था कि मैं I will be able to pull off these many attires. But अभी because अभी है कर सकते हैं, लोग थे और है, टूल्स है, एक्सपर्टीज है, तो अभी हो रहा है. And your videos frozen, just a minute. It's coming back. Okay. So, what did you? What is your background? Did you study something in this, or did you do your engineering, or what did you study? And can you tell briefly about how you came to start making costumes? I wanted to study engineering. I was always inclined towards science बचपन से, but my science and maths was very weak. But still मेरे को ऐसा कुछ अच्छा लगता था, कुछ भी बनाना, ये सब देखना अच्छा लगता था. But eventually I did commerce. उसके बाद BMM, I pursued BMM, Bachelor's in Mass Media, and उसके बाद I did one more PG in Mass Media only, advertising field का ही 1 साल का PG किया था. उसके बाद I started working in an ad agency for a year. Internship किया था पहले 9XM में, उसके बाद ये किया, and then eventually again. But बचपन से I was always inclined towards creativity, creating things with clay या paper mash या something जो बचपन में which we were saying on Mad. Rob, आपको पता होगा, Rob बचपन में आता था, तो he was very वो बहुत कुछ बनाता था, and every time he was making something, one episode he is making a boat, he's making a boat out of paper, and he will make the most simplest of the boats, and he will explain कि ये ऐसे बनाते हैं. Then he will show, अच्छा इसी तरह से आप ये सब भी कर सकते हो, and in the background he will show complex boats. I was like, भाई मेरे को वो दिखा ना, I want to see what's that made, ये क्यों बता रहे हैं, ये तो मैं समझ गया, and पीछे जो difficult वाले वो कभी नहीं बताता, तो वो मेरे को बहुत ये था कि I wanted to make something unique, difficult also, जो achieve कर सकते. And all these बाहर देख के cartoons, जो हम लोग के टाइम पे जो cartoons थे, were also very inspiring. As I mentioned, I had made SWAT cats का जो उनका जो plane है, मैंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में वो उनका जेट प्लेन बनाया था मैंने स्कूल में, उसमें मैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कंपटीशन जीता था. अदर पीपल आर मेकिंग सोफा एंड कार एंड रैंडम थिंग्स, एंड आई मेड अ SWAT cats जेट प्लेन. इतना सा, इट वाज अ वेरी शैबी वन बचपन के हिसाब से, बट स्टिल इट वाज. टीचर भी कहते ये क्या है, शी आल्सो वाज नॉट नोइंग कि कौन सा अच्छा कार्टून होगा, एंड इट वाज बड़े में या छोटे में आ जाते. So cartoons and all these were a very big inspiration, Hollywood movies. So that's what inclined me towards where I am right now. And when I was working also, I was not very much comfortable with the normal work that I was doing as a social media executive. मेरे को करना तो ऐसा कुछ आर्टिस्टिक ही था, and बाद में I left the job. फिर मुझे कॉमिक कॉन ऐसा, I mean I knew about कॉमिक कॉन बचपन से, but I was not knowing कि इंडिया में चालू हो चुका है. I was following, पहले से मुझे पता था, because in Hollywood में every movie, any cartoon movie, any science fiction or any comic based movie का debut comic con में ही होता है, because वहाँ पर ही सबसे बड़ा crowd होता है. तो मैं बहुत बार टीवी पे, डिस्कवरी चैनल पे, स्टार वॉर्स पे I was aware of it, and I was aware of cosplay also कि cosplay करते हैं लोग, costume बनाते हैं. But the thing is कि इंडिया में this was very obscured, this was very looked not down upon, but it was like ये क्या बच्चे लोग कर रहा है. So even if I wanted to make, I was like, ये बना के मैं करूँ क्या, दिखाओ किधर. But then when I came to know कि यहाँ पर हो रहा है, और there are like-minded people like me going there, making things, I was like, okay, तो ये थोड़ा someone can relate me. I can relate to someone in a very combined aspect. So वहाँ पर मैं गया, and competition जीता, and then I got motivated कि मैं वापस से करूँगा. So you participated in Comic Con in 2014. And you won in 2014. Yes. And then you participated in 2018 and you won in 2018. One for every year. Every year, 5 years ago I won. Then main competition बाद में आया. कैसा हो गया था कि that time they had this global competition like Olympics की तरह. Like one cosplayer from one country will be selected, and they will all battle in one country, which was USA. वहाँ पर सारे cosplayers थे, about 8 to 9 countries थे. Australia, China, France, UK, and all these other countries also there. उनमें से best जो आएगा वो जीतेगा the crown.
and that was it. That was the only motivation कि बस वो crown जीतना है और there are other people like you and you can learn a lot of things, a lot of materials you can work on. So that was the motivation. तो उसके लिए ट्राई किया था and India में I won. Then I went over there, but I couldn't win because my skill was based हमारे country के हिसाब से it was nice, but वहाँ पर के हिसाब से it was not the best because वहाँ पर they had better materials, they had better techniques, which I had was like yes I need to learn more. So I came back. फिर मैं सोचा वापस करेंगे, फिर बाद में कोरोना हो गया तो वो नहीं किया. But slowly I was also making contacts from a lot of event people and this movie people कि कुछ बना सकते हो क्या. So freelance I did a lot of projects for a lot of mascot people also. And so you did when you're talking a few days back, you did all this. You made mascots, you went to events, you went to Comic-Con for about 6 years, and it looks like what happened in those 6 years. So my first question is, what kept you going for 6 years? Because obviously, I mean, you said you worked for a year and a half in the middle, but then आगे पीछे 2-3 साल थे. What kept you going and what changed after 6 years? so basically when I was like college, I was after my internship I was focusing on the competition part कि ये कुछ करना है और I try to do this. And उसके बीच में there was a lot of side work also I did, like छोटा मोटा prop and costume बनाना for mostly event people. That time events में काफी आता था and mostly because I had made costumes खुद के लिए भी. So mascot artist जैसा I was also appointed to go to certain events और वहाँ पर मुझे बस खड़ा रहना है as a mascot person. And that was also good kind of work. It was unique and people actually contacted me from Bangalore and Hyderabad कि वहाँ पर आओ, फ्लाइट वाइट सब देख के फिर तो आई मेड मोर कॉन्टैक्ट्स. अब मुझे बाकी भी दोस्त लोग मिले ऐसे, तो वो भी एक चीज किया मैंने. एंड वहां से आई then I started working actually 2016 में I started working in ad agency because मैंने सोचा कि I already invested 2 years and 2 years में कुछ ROI था नहीं इसका, तो इसलिए जाने देते. तो आई वॉज वर्किंग अगेन, जो मेरा पोर्टफोलियो था ऑलरेडी एड एजेंसी का, एड फील्ड का, वही मैं कर रहा था. एंड करते करते आई वॉज लाइक आई स्टिल हैड दिस स्पार्क कि नहीं यार मेरे को वही करना तो है, लाइक ऐसा कुछ करना तो है अलग, बट मतलब वो वे नहीं मिल रहा है. एंड ऑल्सो इन अ सोसाइटी यू हैव टू डू समथिंग जिसमें कुछ तो रेप्यूटेशन, कुछ तो कुछ तो हो, कुछ वैल्यूबल हो. बट यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था वैसा. Hello? Anand, you're on mute. Yeah, we can hear you, but I think there's a slight issue with the net connection. No, I think I got okay. random spam. So wait, after working at agency, I basically मेरे को थोड़ा सा realization आ गई, मेरे को करना तो कुछ like art वाले कुछ करना है. Then again I went in the competition scene and at that time I went full fledged in कि मैं पूरा proper करूंगा. And again then when I won the competition, तब तक I was like okay चलो सही है करते हैं. And that's how I got a chance to go outside. I've been to Australia, Thailand, Bangkok, and America, Chicago. So this was a full eye-opening experience कि India के बाहर this field apart from others is so vast and यहाँ पर भी potential है. As I mentioned पहले भी we don't lack because of artists तो यहाँ पर बहुत है. We have made Taj Mahal and other magnificent things over here. तो इंडिया में आर्टिस्ट लोग की तो कमी नहीं है. It's about the knowledge and the materials which we lack. That's the assessment that I made. अगर वो हमको मिल जाएगा ना, then यहाँ पर we can make our own thing. So वही in this what was your first paid assignment? First, I think in the last 1 year.
in the last year. That kicked off this whole ad campaign and ad business of yours? Well, it was superhero costumes था. IPL के लिए किया, वो किया. उसके बाद फिर like small face mask बनाया था Audible का. तो हाँ, that started. And how do people approach you, in the sense, where do they get your contact from, or how does the industry, how did IDFC get in touch with you, how did Minal Murli get in touch with you? How does that happen in an industry like this where you don't have a lot of people? Basically, the brands will not connect to you. Brands connect to agencies, ad agencies. Ad agencies के पास होता है production houses. Production houses के पास होता है directors, costume designers, costume stylists. उनके पास होते हैं dressmen, and these people know कि particular person knows. Art director को पता होगा, art director पता होगा, उसको पता होगा सेट वाले लोग कौन है. Costume designer पता होगा कि हाँ, जीत बोल के कोई है costume बनाने वाला, X person बोल के है वो ये बनाने वाला, वो बनाने वाला. So that's how you. And you met any art directors on your trips abroad, or how did the word get out to these production houses? Here तो it's all based on work. आपने एक बार एक काम किया, वो काम basically the work speaks for itself. If आपका काम अच्छा है, ये सबके लिए applicable है, even for an actor or someone else. आपका काम अच्छा है, आपको directly approach किया जाएगा for the next project, because that's how you get, if you made an astronaut and some other दूसरा ad चल रहा है and they also want an astronaut, they will, अरे भाई हमको पता है one person वो उसने बनाया था, मे बी उसको पूछो. तो इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ. यहाँ पर आई थिंक इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ ही है, पूरा वैसे ही चल रहा है. तो जितना काम अच्छा रखेंगे उतना ही आपको और कॉल आएगा, उतना ही आपको पता रहेगा. आई नेवर हैड टू एडवर्टाइज माई सेल्फ, दैट मेरे को कभी इतना करना नहीं पड़ा एडवर्टाइज पब्लिकली, बिकॉज पब्लिक में कोई डायरेक्टर नहीं चल के जा रहा है रोड पे. इट्स वो इन द इंडस्ट्री वो वर्ड ऑफ माउथ से ही स्प्रेड होता है. दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड फॉर सच काइंड ऑफ वर्क. रेस्टोरेंट्स की तरह है ना, रेस्टोरेंट की तरह होता है कि आपने बार अच्छा खाना बना दिया ना, तो आप दूसरा ही आदमी बोलेगा अरे भाई आप वहां पर जाके ट्राई करो, उनका इडली अच्छा है. तो वैसा ही होता है आई थिंक. But you don't have a Zomato for your industry. So I think T-Works will be a Zomato for a lot of artists. अरे ये आर्टिस्ट का एक ये लिस्ट है, बिल्डर्स का ये लिस्ट है, ब्लैकस्मिथ है. तो आई थिंक that's also can be the next Zomato actually. Artist yeah. Yeah, I'm hoping you do that. Of course, we are not for profit, so IPO तो नहीं हो सकता हमारा. But we want to be a list, and that's also why we are having these conversations here. I want to talk a bit about the technicalities of the costume. I mean, first you mentioned कि अच्छा, can you give us a tour of your studio and show us and tell us a bit about the space itself? तो ये basically the studio is my dad's shop only. तो वो खाली कर दिया. How do you flip it? So this is right now I'm working on a Japanese kabuto mask. तो ये kabuto बनाया मैंने अभी. ये भी एक ad के लिए है. So ये कैसे बना है? ये कैसे बना है? ये फोम का ही बना है. एक पीस I've made a 3D model. This is ये आपको दिख रहा है राइट? यहाँ पर देखो मैंने इसका 3D रेंडर बनाया है. देखो ये फोटो है, रेफरेंस फोटो को देखकर I've made a model. See in the background देख सकते हो ना? Yeah. So I made a model इसके हिसाब से. इसका काउल बनाया है. And after making this I realized this is actually similar to Darth Vader from Star Wars. तो Darth Vader का जो mask है just inspired from samurai kabuto helmets only. ये मेरे को अभी मालूम पड़ा. Very interesting. So yeah, this is my small 3D printer. यहाँ पर only I make all the small details जो मैंने डाले हैं सूट में. ये मेरा बेंच है, इधर सारी चीजें हैं. Another inspiration or other superhero suits. This is my tray where a lot of stuff are there. That's a compressor for airbrush. Airbrush जो होता है ना उसके लिए. And ये कुछ prop रखे हैं मैंने. This is the Stormbreaker. That's Optimus Prime. This is for a client.
ये ग्रीन गॉब्लिन है मेरा कॉस्प्ले, बैटमैन, स्टॉर्म ट्रूपर्स, दिस इज द पबजी हेलमेट जो है ना पबजी का मेन है, उसका बेसिकली हेलमेट जो था वो मेरे पास है नहीं अभी, बट ये मैंने बना के रखा था, ये है। दिस इज द प्रेडेटर व्हिच हैज द इनसाइड फेस आल्सो, दिखाया था मैंने आपको ये भी है। अनदर आयरन मैन, स्लेयर, सी दीस आर ऑल द अदर प्रॉप्स। दिस इज गंडम एनीमे, गंडम का एनीमे आता है। दिस इज माय अभी बंद है, these are two swing machines, and this is the Optimus Prime. It is yet to be, it's not finished completely, but it's almost done. ये थोड़े टाइम में बन जाएगा, and I'll post it on my Instagram. This is about 8 foot tall. This is for a client. Yeah, this is for an event person, जो basically mascot है ये. This is a mascot. So what these costumes technically, ये ऐसे costumes जो होते हैं वो, ये बेंच है हमारा, ये मिरर है to check costumes, कुछ भी दिखेगा इसमें देखने का होता है। And this is I have yet to post this 3 foot Iron Man I've made, 3 foot का है खाली। And what is this made of? This is also EVA foam, rubber only. EVA foam. That's the same material. It's rubbery. Okay, can you tell us a bit about this rubber, and can you, so we talked about materials, right? I remember in the last webinar we were talking to Saad, who's a blacksmith artist, and Yes. he's also on the call. He mentioned one of the challenges that he faced is he did his blacksmith, he did one course in the US, and there are a lot of blacksmith artists there. When he came to India, it took him a long time to get the equivalent material, the equivalent metals that you get in the US in India, क्योंकि उनके names अलग है, उनके codes अलग है. And you also spoke of something similar. Can you tell us about some of the materials you work with, and what were the, how did you find those materials? On the very basic level, these are, ये इसको बोलते हैं EVA foam. EVA basically ये जो होता है, this is used in your yoga mats और जूते का सोल, your shoe का सोल, this is the same material, and it is a very soft malleable material, sponge है basically, ठीक है। and to be very frank, पहले हॉलीवुड में और बाकी सारे मूवी इंडस्ट्रीज में काफी प्रॉप्स इसके बनते ही है ऑलरेडी, पहले भी 1960 70 से यूज हो रहा है ये, ऐसे इट्स नॉट अ न्यू थिंग, सो इट इज मोर इजियर टू मेक ऑन दिस। और इसी के ऊपर this, ये बाहर as I told you, this is a raw material, okay, and बाहर in America and all, you don't really get a lot of raw materials, you get, आपको हर चीज branded ही मिलेगा, foam भी आपको नहीं मिलता है, so people you have to buy over there yoga mats, उनको मॉल में जाके, वॉलमार्ट में जाके योगा मैट्स खरीदना है, and when you're buying a product पे ज्यादा पैसा होगा, रॉ मटेरियल सस्ता होता है। इंडिया में I'm like, okay, ये होता क्या है, EVA foam I googled, then I came to know कि rubber sheet, then I came to know कि rubber sheet ये होता है, then I found out India Mart website है कि local supply कहाँ पे है, it is in मुंबई में चेंबूर, and shoe markets, basically shoe market में मिलता है, so it is easier over here, यहाँ पर पूरा एक रोल मिलता है, this is one roll, you can see, this is one full roll of foam, ऐसा full एक रोल आता है, 1 by 2 meter, 1 by 2 meter उनका dimension होता है, so you get the foam, उस पे आप कटिंग करो, उस पे you make pattern cut करो, then you join the patterns, and this is how you make one mask. So how does this become stiff? Does it become stiff because okay, it's not very stiff. It's rubbery है at the end, but क्या है कि when you paint, this does not look, rubbery at all. Ideally, it was very suitable for shooting line, because shooting में हर चीज नकली होता है, whatever you are seeing, the armor, the guns, वो एक्टर को डैमेज कर सकता है, या तो कुछ भी डैमेज कर सकता है, सो इट इज ऑल रबर। ये होता है, या फिर केमिकल रबर होता है, जैसा पॉलीउरेथेन, व्हिच इज उसके लिए केमिकल्स यूज करके बनाना पड़ता है, एपॉक्सी रेजिन एंड रेजिन रबर, सो दैट इज नॉट अ डिफरेंट रबर, बट ये एक सिंपलर रबर है व्हिच यू कैन मेक पार्ट बाय पार्ट। तो इसका मेन पैटर्न्स है, पैटर्न खुद बन, आई मेक माय ओन पैटर्न्स, जैसे ऑनलाइन आपको पैटर्न मिलेंगे, बट मैं तो आपको खुद ही बनाना है। तो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल हियर। एंड पेंट्स तो बहुत तरह के पेंट्स होते हैं बाहर, एक्रिलिक बेस्ड पेंट्स ही यूज करते हैं, एंड एक्रिलिक तो हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, फेबर कास्टल, ये जो भी ब्रांड्स हैं उसी के पेंट्स यूज करते हैं।
तो हाँ What हाँ makes a superhero costume look like a superhero costume? It is rubbery, it is stiff, it looks different basically. It looks like an armor. which superhero costume you're talking Say the Superman costume in the Superman movies. about? Superman movie. I have not watched a lot of Superman movies. Because if you can Google right now, अगर आप देखोगे ना, क्रिस्टोफर रीव फर्स्ट सुपरमैन, उसका सुपरमैन देखो, है ना, उसका सुपरमैन देखो, and the new Henry Cavill Superman. Both of them side by side, and you will see vast difference in the costume. है ना? Why is that? Because these were based on comic books, and comic book में जब आप ड्राइंग बनाते हो, उस ड्राइंग का बेसिकली ये है कि जो भी रीड कर रहे हैं उसको समझ जाना चाहिए कि ओके ये सुपरमैन है, विजुअली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए. एंड दे मेड अ कलर की ब्लू एंड रेड शॉर्ट्स, ब्लू कलर का उसका कॉस्ट्यूम है, ये एम्ब्लेम इज रेड एंड येलो, रेड केप. ओके, दैट इज द सिंपलेस्ट कलर दे विल पुट इन अ कॉमिक बुक. बट जब उसको रियल में बनाया 1970s में, दे मेड अ नॉर्मल लाइक्रा बॉडी सूट बनाया ब्लू कलर का, एंड इट लुक वेरी बेसिक, राइट. उसका सूट देखो ना, हेनरी वो क्रिस्टोफर रीव का, कितना सिंपल लगता है, राइट. बट अभी इफ यू यूज दैट, अगर नॉर्मल कोई ब्लू शर्ट पहन के आ जाएगा टाइट फिटिंग, फील नहीं आएगा, आपको फील नहीं आएगा. यू नीड मोर डिटेल, यू नीड मोर टेक्सचर. सो द सुपरमैन दैट राइट नाउ, द हेनरी कैविल मैन, वो पूरा टेक्सचर्ड फैब्रिक है, वो फुल कंप्यूटर में बनाया गया. सो उसका पूरा एक पैटर्न बनाया है, वो पैटर्न को प्रिंट किया है, एंड ईच पैटर्न इज लाइक एलिवेटेड 3D पैटर्न. सो आप, इट्स नॉट लाइक ये जैसे जिस टी शर्ट पे जो प्रिंट है ये तो 2D प्रिंट है, बट उस पे जो प्रिंट है वो टेक्सचर फील होगा आपको, एंड दैट गिव्स मोर डेप्थ. So technically, I mean, ideally, how do they achieve that? Is it some sort of a molding process, or I don't know, stamping process, or a printing process, or is it a different material altogether? it's basically certain special kind of rubbers they have. अब हम लोग का जो normal t-shirt होता है जिसमें logos होते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग printed logos, that t-shirt is washable also, right? आप wash भी कर सकते हो, but after certain washes वो rubber फटता है. तो वो वैसे ही कुछ rubber है, but it is a much more advanced rubber that also stretches along with the fabric. But हम लोग का जो fabric जिस पे patterns है, आपका t-shirt stretch होगा, but वो logo stretch नहीं होता. इनका वो भी stretch होता है. So they have specially made, उस पे उन्होंने बहुत R&D किया हुआ है. Especially superhero department ही अलग है पूरा. उसके लिए fabrics they produce like hundreds of yarn. उसका fabric अलग बनाएंगे specifically for the movie. उनका उतना budget उनको मिलता है. One सुपरमैन कॉस्ट्यूम जो है हेनरी कैविल का, ये वो पूरा कॉस्ट्यूम का प्रोसेस फॉर 7 months स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम ड्राइंग टिल कास्टिंग के साथ एंड में 7 महीना लगा उनको खाली ये बने. 7 महीने में बना, आधा से ज्यादा पिक्चर बन जाता है इंडिया में. नॉर्मली 1 year तक मूवीज बनते हैं, एक्सेप्ट बाहुबली. नॉर्मली 1 year में पिक्चर बन जाता है इंडिया में बड़े बड़े. तो उधर से कॉस्ट्यूम में ही टाइम गया इतना, सोचो. तो इतना यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो हम भी कर सकते हैं. How did you make the astronaut suits? Now the astronaut suit, तो normal कपड़े का fabrics I've used, and I studied. See, the thing is कि the best part about this job is when you are making something, when making a replica, we have to study what is it is based on कि actual में क्या है और उसका replica बनाना है. तो actual costume जो actual astronaut से, it has like about 16 layers of fabric. Okay, and that fabric is not actually fabric. उसमें बहुत तरह के polyester, ये अलग अलग तरह के fabric which filters out all the dust in the space. Radiation के लिए अलग fabric होता है. So 16 fabrics use किया है actual जो Sokol suit है इन सब में. Sokol और जो Apollo costume है, 16 fabrics है. Ultimately वो suit almost 1 inch है, उससे थोड़ा कम, मतलब mostly 20 mm. इतना सा 20 mm is like, I don't know how to explain. 20 mm समझे आप कितना होगा ना? 1.5 मीटर उतना थिक होता है एस्ट्रोनॉट सूट का कॉस्ट्यूम. ठीक है, तो अभी now I cannot put 16 fabrics. I have to use normal fabric. उसके बीच में sponge I'll put to get the thickness. Normal जो अपना बेड का sponge होता है, right? Yellowish जो सोफा पे होता है. So that I use. In my astronaut it has 4 fabrics actually. The outer fabric which is satin white. उसके अंदर एक basic manger part बोल के fabric होता है जो हमारा basically. Hey guys, is our chat clean now? I mean, it's not clean, but if people have questions, I think you can now put it in the chat box.
I'll just enable the chat. I think we have disabled it for now. Okay. Okay, so I'm enabling the chat in case anyone of you have any questions. Just put it in the chat box. As I mentioned, fabric जैसा देखो ये एक है. This is plunger part. इसका मैंने ये बनाया. This is a sample prototype I made. This is the Wow. This is a tank. जो tank होता है ना, tank bomb tank. They wear this because tank जब rocket फेंकता है उसका इतना sound होता है that you will go deaf for your life. Entire life आप deaf हो जाओगे. So specifically they had to make some kind of headgear which will protect your ears. So जो भी अंदर बैठता है in the tank, they have to wear this. So this is for a Bangladeshi movie. उसमें एक military scene है जहाँ पर बहुत सारे tanks आते हैं. So they had contacted me कि हमको ऐसा कुछ बनाना है. So they showed me a reference. So based on the reference, I made this is a mock-up I made, and the real one is in black fabric. तो ये basically mock-up बना है. इसके अंदर sponge वंज डाला है पूरा. ये ear muffs जैसा बना है. Then these are all sound suppressors. The actual वाला है. यहाँ पर this is a simple sponge in it. Okay, the actual वाला है वो sound suppressors है. जो आप simplest में, have you gone to a jam room? I haven't. Well, all these guitarists go to jam in. तो एक जो उनका जो walls होता है, it is made out of thick एक bars होते हैं, sponge जैसा कुछ होता है that does not let sound in and out. तो उसका miniature form में use किया जाता है in this helmet. तो ठीक है, उतना specific तो नहीं जाना, but दिख तो simple रहा है, right? तो दिख तो simple बाहर रहा है. Okay, I'll put a sponge only. It mimics that thing. On screen it looks same. तो वैसा ही थोड़ा बहुत स्टडी करने. This is the best part about this job कि I get to learn things also. कि okay, ऐसा भी कुछ होता है क्या? Okay, this is how it's made. Okay, and trust me, in this military field, they have a lot of special equipment, मतलब special materials. So उसका mock-up बनाना is very interesting. Guns का भी mock-up बनाना है. There are a lot of guns made in the shooting industry which are actual cast out of real guns. जैसा बाहुबली में जो जितनी भी swords है ना, एक sword I'm not able to recognize sword है basically जो main अपना प्रभास hold करता है. That is based on an actual sword from the कुछ 12th-13th century. वो लोग ने म्यूजियम से मंगवाया था उनके प्रोडक्शन हाउस में. उसका पूरा कास्टिंग निकाला, 3D स्कैन करा और उसके बेसिस पे they made a replica one. So वैसी what उन्होंने तो इतना मेहनत किया, but I could do is just get a picture and all. So this is what I did based on the real one. So ये एक चीज है. So what are some of the most recent works that are going to go into the field now? They have yet to post. Yeah. I've made Beer the Robo Boy. एक छोटे बच्चे के लिए costume बनाया. You can show that on your. I'm a little scared to share my screen. I hope no one draws. But let's try. Let me see. Okay. I should go. Instagram में भेजा है क्या? डाला है मैंने. I WhatsApp to Mega. आपका मेरे को बहुत नीचे चले गया था WhatsApp में, तो मैं आपको नहीं भेज पाया. I sent it. इनको कर दो ना वीडियो और. हाँ मैं क्या करूँ? Wait, Mega has sent me something. Oh yeah, she sent it here. This is the most work. Yesterday only I gave it. इसमें अभी तक पोस्ट नहीं किया because अभी मुझे परमिशन है, अभी तक लाइव ही नहीं गया, तो अभी तक मुझे डालने की जरूरत. Right. So you sent this out yesterday, yeah? हाँ, इसको मैं yesterday delivered it to the client and this wearing that is my यहाँ पर मेरे बिल्डिंग में लड़का है उसने पहना है, but this is for the owner of the cartoon only. जो कार्टून जिसका है उसके लिए बनाया है, तो उसके बेटे के लिए ये कॉस्ट्यूम. वो तो फोटो मेरे पास है बट वो भी डाल नहीं सकते. बट ये मेरा this is a kid from my place. He was my dummy. उसको मैंने पहनाया था. So that's a very small. So that's also a very good part कि I have made adult costumes as in like हम लोग के साइज का भी बनाया, बच्चे लोग का भी बनाया. This is the second kid costume that I made. इसके पहले I did for Euro Kids which I posted on Instagram. तो Superman type costume बनाया मैंने. Those are for 5-6-year-old kids थे वो लोग. Literally 4 feet tall, like very short. And I was not knowing कि इतना छोटा होता है, मुझे लगा थोड़े बड़े होते होंगे. So it was challenging to make small, gloves, small
shoes, small And you have to logo. stitch all these. You have to stitch. I mean, I'm sure हाँ, a lot of stitching yes, is yes. involved. हाँ, I have tailors. तो टेलर को बुला के पूरा एक छोटा सा बनाना पड़ता है सब कुछ, तो छोटा सा बनाया था. There are some questions here now that we opened the chat. Do you use silicone molding? Someone is asking. Yes, I have used silicone molding. मैंने एक आयरन मैन का हेलमेट बनाया था, उसके लिए मैंने यूज किया था. सिलिकॉन बेसिकली कास्टिंग के लिए यूज होता है. ठीक है, सिलिकॉन कुछ चीज आपको बनाना होगा, किसी चीज का रेप्लिकेट, इफ यू वांट टू रेप्लिकेट समथिंग इन हार्ड मटेरियल, तो आप सिलिकॉन यूज करते हो. तो यहाँ पर जो लोकली मिलता है वो आरटीवी सिलिकॉन बोलते हैं उसको, आरटीवी. आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द फुल फॉर्म, बट वो कास्टिंग सिलिकॉन है. ओके, उसमें जैसे समझो फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये बनाना है, इसका मुझे कॉपी बनाना है, सो इस पे आई विल पोर दिस सिलिकॉन ऑल टॉप ऑफ इट, फिर इसको रिमूव इट, तो मेरा वो डाई बन गया रबर का. उसके अंदर आई विल पुट एनी हार्ड मटेरियल, पीओपी और सम अदर थिंग, और फिर आई पुट लाइक एन आइस ट्रे, आई पुल आउट अ न्यू कॉपी ऑफ इट. तो आई वर्कड ऑन दैट. बट सिलिकॉन जो सिलिकॉन जो हमारे पास अवेलेबल है वो थोड़ा केमिकल बेस्ड, उसका थोड़ा प्रॉपर मेड, उसमें लाइक यू हैव टू मिक्स टू केमिकल्स, जैसे हार्डनर एंड दिस वन मोर केमिकल, नॉट एबल टू रिमेम्बर व्हाट इट इज, बट रेशियो वाइज जो इंडिया में जो सिलिकॉन है ना, इट इज लाइक 98% सिलिकॉन, 2% इज द केमिकल यू हैव टू मिक्स. इफ यू इंसर्ट मोर तो जल्दी हो जाएगा, तो खराब भी हो जाएगा. कम करोगे तो वो बनेगा ही नहीं. बट जो अब्रॉड वाला है, अब्रॉड में एक ब्रांड आता है स्मूथ ऑन, दिस इज द फिरंग मटेरियल स्मूथ ऑन. इसका सिलिकॉन है सुपर सिंपल, 50-50. आप खाली ऐड करो और वो कोई भी लाइक यू जस्ट रीड एंड कोई भी बना सकता है. बट द थिंग इज दिस सिलिकॉन इज अबाउट 4 to 5,000 rupees for 1 kg, और हम लोग का सिलिकॉन जो इंडियन सिलिकॉन दैट इज अबाउट 1,500 rupees 1 kg. इट्स मैसिव डिफरेंस. सो ज्यादा लोग लोकल में यूज करते हैं, लोकल जो सिलिकॉन है वो यूज किया जाता है. What are I think when we are talking about challenges, that why isn't there a Jurassic Park in India, or what is the challenge that Indian filmmakers face when they want to make good props? But you're saying Indian filmmakers don't face a problem, it is Indian prop makers who face a problem. I think the core problem जो in budget है, एंड जो बजट है उसमें बन जाएगा if they allocate that budget, if movie producers and all these people will allocate a budget for it, then बनेगा. क्योंकि we are making 300 crore movies, 400 crore movies without any special effects, like normal love stories ही हमारे इतने चल जाते हैं बड़े. तो बजट तो है, if they allocate it, किसी को बनाना है तो कर सकते हैं. एंड जुरासिक पार्क इंडिया में तो डायनासोर पार्क है, there's one in Ahmedabad, I've been there. There's also a dinosaur from India only, na? क्या नाम है उसका? Rajasaurus. Rajasaurus is Indian dinosaur, you know, right? I had no idea. There's a Rajasaurus. There's a Rajasaurus. Yes, Rajasaurus जो यहाँ पर इंडिया में मिला है, राजस्थान, I don't know, वहाँ पर उसका skeleton मिला है. And because it's an Indian origin, तो Indian नाम Rajasaurus डाल दिया. Real है वो. He almost looks like, you can Google it. He almost looks like T-Rex, but he has a unicorn type horn above his neck. Sorry, above his यूनिकॉर्न राइनो जैसा उसका थोड़ा एक उसका पीक आता है, ऑलमोस्ट लाइक टी-रेक्स, ऑलमोस्ट. सो है, मतलब बना सकते हैं, इफ यू कैन मेक, आई थिंक बन सकता है, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी हायरिंग पीपल फ्रॉम अब्रॉड, लाइक दिस मूवी कॉल्ड जादू, उसका पूरा स्पेसिफिक, उसका जो पूरा जादू जो बनाया था कोई मिल गया में, द इंटायर एसएफएक्स जो भी यूज किया है, दैट इज ऑल फ्रॉम हॉलीवुड, इंडिया में नहीं बनाया वो. रावण का भी सूट फ्रॉम शाहरुख खान का तो मूवी था रावण, हिज एंटायर सूट इज फ्रॉम यूएस बेस्ड कंपनी से बनाया था. तो अगर यहाँ पर कोई बनाएगा तो है बनाने वाले लोग भी, बट आई थिंक क्वालिटी इज वेयर वी लैक. तो अगर वही है, एट द एंड बजट है, अगर क्वालिटी भी, बजट भी आ जाएगा, बिकॉज दीज मटेरियल्स आर 3 to 4 times एक्सपेंसिव देन नॉर्मल मटेरियल, तो वो सब अगर इशू सॉल्व होगा तो बनेगा यहाँ पर भी. आई डोंट सी. And I'm guessing, like you said in the beginning, what we are doing now is a technique that has been used in the 1970s or 80s or 90s. And now what we are doing now in India, that's what you were saying, right?
and now those there are new techniques, new materials जिसके लिए R&D चाहिए. And I'm assuming R&D के लिए the producer has to be willing to risk कि तुम R&D करो 7 महीना 8 महीना 6 महीना and then Yes. you do something. So you spoke about Stan Winston. Stan Winston from who did Jurassic Park, who did the Terminator, and he established a school, Stan Winston School. Yes. Can you tell us a bit about? I mean, I'm assuming a school like that is important. How important is a school like that? See, it is important over there because वहाँ पर opportunities है. यहाँ पर अगर बनेगा तो then it becomes important for us also as artists like me. उनके लिए बहुत अच्छा चीज है because what essentially they are doing is they are making a library like of all this kind of work. Sorry. Just to pause you, can you give a brief about Stan Winston and the school, the Stan Winston School, and how others came out of that school? So basically मैंने जितना मुझे पता था कि all the 90s movies जो आप देखोगे, all the science fiction movies, Robocop, Back to the Future, Total Recall, you name it, from the Aliens, ये Jurassic Park, ये सारे जो भी characters बने थे, this was made possible from one studio, Stan Winston. वो आदमी जो था उसने and his team they made. इसके पहले भी और भी लोग थे, I don't know them if I'm wrong, but he is very popular. इसने basically start किया था. They started giving out solutions to किसी को science, because उस time पे in the 90s science fiction was a very 80s science fiction was a very big genre. कितने सारे science है ना, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए. यहाँ पे अगर डायरेक्टर को बहुत कुछ चाहिए, अगर गोस्ट बनाना है तो he will search out for someone who can make a ghost. तो वहाँ पर this guy was there and the team was there, so they made this thing. उन लोगों ने उतना डाला पैसा और उन्होंने बनाया, and that's how successfully they were able to make. और there were other studios also, like मेरे को Industrial Light and Magic बोल के है जिन्होंने Star Wars किया है, उनका पूरा बनाया. तो ये सब मिलके ये लोग ने पूरा स्टार्ट किया, and eventually what happened कि they pulled in a lot of people who are interested in making this kind of thing. फिर slowly what they became an empire. उन्होंने पूरा empire बना लिया और अभी they teach courses. किसी और को इंटरेस्ट है तो आप आओ, आप हमारे साथ काम करो या हमारे लिए काम करो, और यू मेक योर ओन स्टूडियो और यू मेक योर ओन प्लेस. क्योंकि वहां पर हैलोवीन इज आल्सो बिग थिंग. हैलोवीन में कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं लोग. जनरली नॉर्मल पीपल आल्सो डू इट फॉर हैलोवीन इफ यू नो. सो क्योंकि उधर मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वहां पर ऐसा सिनेरियो ही अलग है कि सब लोग कर रहे हैं तो लोग करने लग गए. यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं. वी वर मोर इनटू लव स्टोरीज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मूवी मेकिंग. तो यहाँ पर कभी ऐसा नीड ही नहीं आया, तो अभी आ रहे हैं क्योंकि अभी सुपर हीरोज आर बिकमिंग वेरी हिट इन इंडिया, है ना. एज आई टोल्ड यू, देयर इज अ रीजन ना वेयर व्हाई मार्वल मूवीज आर लॉन्च्ड अर्लियर. पहले हमारे इंडिया में क्यों रिलीज हो रहा है, पहले मार्वल मूवीज यहाँ पर क्यों लॉन्च हो रहा है कंपेयर टू यूएस में, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा लोग देखते हैं. नाउ इवन योर ओला ड्राइवर नोज अबाउट थॉर एंड ब्लैक पैंथर. पहले किसको पता था, है ना. तो this is the thing. Why have I done a superhero costume for a chocolate ad? Because need है, right? अभी यहाँ पर बन रहा है need, जो पहले से था उधर. तो it's a good opportunity now कि ये भी फील्ड में जा सकते हैं, and artists like us can collaborate more to do work for these people and to बनाने अच्छा लगता है तो you can make now. There's one question. When you were just starting out with costume design and prop making, how did you quote a price for the job? We are getting into business now. How did you quote a price, especially in such a niche market where you don't have many other people to use as a reference? I think before that, you can also talk about how long does it take you to make a costume? See, technically, कैसा होता है कि initially I spent a lot of my dad's money and my money on R&D only. मैंने इतना in Xeroxes in going you're from मुंबई में से आपको पता होगा, in Crawford market टाउन में there's a full market. जैसे दिल्ली में कौन सा मार्केट है भूल रहा हूँ, बट मुंबई में जो मार्केट है उधर सब मिलता है, हार्डवेयर, कपड़े, सब कुछ मिलता है. So I was normally a kid will be fascinated to go to a toy store. वाह, खिलौने की दुकान जाना है, या फिर कोई है ना
तो वैसा मुझे बहुत अच्छा लगता था तो गो टू दैट प्लेस, बिकॉज वहां पर सारे टूल्स है, वहां पर सारे चीजें मिलते हैं which I can use to make things. So I researched a lot. ऐसे ही I used to go from college. I used to take a train ticket. I used to go there in my college days. The 12 बजे 11-12 I used to land. Land नहीं, वहां पर पहुंचता था, घूमता था शॉप टू शॉप एंड ओके यहाँ पर कार्विंग टूल्स मिलता है, यहाँ पर ओके जैसा स्क्रू ड्राइवर जो साइड से कर सकते हो इस ओके ऑलरेडी ऑलवेज न्यू कि ऐसा स्क्रू ड्राइवर होता है, साइड वाला भी स्क्रू ड्राइवर होता है ओके। फिर वायर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, कॉपर वायर पता था, there's brass wire also, there's wires which have 4-5 wires inside them. then ये किसकी होते थे, ये टेलीफोन वायर है, with that okay I can use this for that. फिर मैं ये वो मोटर्स है, डीसी मोटर, छोटे छोटे मोटर होते थे जो हमारे रिमोट कंट्रोल कार्स में होते थे। then I saw some other motors which was like ये कौन सा है, ये डीवीडी में होता है मोटर, ये लैपटॉप के अंदर मोटर होता है, मतलब ये भी यूज कर सकते हैं कुछ गाड़ी बनाने में। तो थोड़ा फिनिकी, थोड़ा ये सब, थोड़ा आई यूज्ड टू ट्रिक एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू नो कि इसका सामान कितने का आता है। भाई मुझे पता चल गया था कि ये एक्सपेंस का कितना कितना जाएगा। एंड व्हेन आई एम वर्किंग, क्या उसने पूछा था कि हाउ मच आई कोट। how do you decide on a price, especially in a niche market जहां पर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट है ही नहीं एंड यू डोंट हैव अ रेफरेंस? ओके सो इसका रेफरेंस व्हाट आई डिड इज आई टुक इट फ्रॉम अब्रॉड ओनली। नॉर्मली पीपल आउटसाइड आर मेकिंग थिंग्स एंड दे आर चार्जिंग लाइक अ वेरी बिग अमाउंट। मतलब नॉर्मली अगर कोई मास्क है तो जैसा अभी एक नॉर्मल मास्क शायद 10 to 20,000 रुपीज का आएगा। एंड आई कि इतना महंगा शायद इतना महंगा होगा क्योंकि उतना मटेरियल होगा। तो मैंने जब स्टडी किया बोले ओके इतना तो नहीं है, तो मे बी चल आई ऑल्सो ट्राई टू पुट 10,000, बट यहाँ पर कोई नहीं ले रहा 10,000। बट देन आई वाज लाइक ओके इतना आई थिंक वो ये चीज है कि बाहर का जो प्राइसिंग है ना वी कैन नॉट मैच even if it's just same hard work. ये एक प्रॉब्लम है। बट when you're in a niche market, when you don't have a competitor, when the buyer doesn't have an alternative, you will dictate the price. या तो लेगा तो नहीं लेगा। तो आप एक प्राइस बताइए अगर आपको लगता है। नॉर्मली when I make a mask or helmet, like it goes from 4,000 to 5,000 to 10,000। कोई भी हेलमेट, एस्ट्रोनॉट हेलमेट हो या ऐसा कुछ ग्रीन गॉब्लिन जैसा हो, तो 4 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो 4-5,000 नॉर्मल में कोई ले लेता है। तो बट इफ यू गो अब्रॉड, वही एस्ट्रोनॉट आपको 25 का भी मिलेगा। नाउ इट इज सेड राइट, देयर इज अ बायर एट 25,000 का भी। How long? How long? Yeah, does it take you to make? See, when I was starting, it was taking a lot of time. मेरे को ओके इसका डोम कैसे बनाना है, इसका ये कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है, तो रिसर्च में ही बहुत टाइम चला गया। बट इवेंचुअली इन एवरी वर्क, इन एवरी काइंड ऑफ वर्क, आपको ना काम सिमिलर आता रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ। लाइक इफ यूर अ डॉक्टर के स्टार्टिंग पेशेंट्स ओके इस टाइम खांसी था, ओके इसको खांसी था बट इसका खांसी थोड़ा अलग था। बट 10 years के बाद उसको सेम खांसी आने वाला है। कस्टमर नहीं सॉरी, जो पेशेंट है ओके वो सेम प्रॉब्लम लेके आएगा, है ना, सेम प्रॉब्लम से रिपीट होता रहेगा, है ना, पब्लिक जो वही चीज आता रहेगा। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि इनिशियली आई मेड ऑल दिस थिंग, मुझे पता चल गया था कि नॉर्मली जो हमारा फेस होता है इन मिलीमीटर्स इट इज 160 to 170 mm, ओके नॉर्मल फेस। तो पहले एवरी टाइम आई एम मेकिंग अ हेलमेट, मेरा हेलमेट बड़ा बन रहा है, ओके स्केलिंग नहीं समझ रहा, ये तो बहुत छोटा बन रहा है। नाउ इट इज ऑप्टिमल बन रहा है, प्रॉपर जैसा बनना चाहिए, बिकॉज अब मुझे पता है 160 to 170 के बीच में होता है किसी का भी सर। तो मेरा अभी एफिशिएंसी बढ़ गया बिकॉज मेरे को पता है कि कितना करना है मुझे। अभी पहले मैंने बाइंग मटेरियल आई यूज्ड टू बाय डबल इन केस मिस्टेक हो गया तो। अभी मिस्टेक नहीं होता है, अभी मुझे पता है कि इतना कटिंग मैंने जितना किया है वो उतने में ही बनना है, उतना ही गम लगना है। अभी आई नो द कॉस्ट, आई नो द थिंग, बेसिस पे टाइम भी मेरा कम हो गया। तो इफ आई एम जनरली मेरा वर्क 7 days to 15 days के बीच में होता है, कोई भी प्रोजेक्ट 1 week तो होता ही है, उससे कम भी हुआ है provided if I have the work already, if it's very small, like very small, not to make this also, yeah, tank helmet, or this also took me 8 days after starting the work। उसके पहले 3 दिन तो खाली बस ब्रीफिंग में चले गया कि ये करना है वो करना है। 8 days I had to make 10 of these, 3 days alone I took to make one। ये डायरेक्ट नहीं बना है, इसके पहले 2 और बने थे। उसमें एक में द ईयर पीस वाज वेरी लॉन्ग, एक में मफ बहुत बड़े थे, एक में दिस पैडिंग वाज नॉट कमिंग स्ट्रेट।
तो वो ठीक करते करते थर्ड प्रोटोटाइप वाज द फाइनल वन, तो इसमें 3 दिन चले गए, एंड देन रेप्लिकेशन में और 4 डेज चले गए। तो बोला जनरली 7 to 15 डेज के बीच में बन जाता है, मैक्सिमम इट कैन गो टू 1 month, which is highly unlikely, which was the fossil वाला एस्ट्रोनॉट, बिकॉज सामने से ही चेंज हो गया था ब्रीफ। दे वर लाइक कि पहले जेट पैक नहीं चाहिए था, देन दे वांटेड द सॉरी ऑक्सीजन टैंक आल्सो, व्हिच दे हैव नॉट इवन शोन इन द एड। मैंने इतना अच्छा बनाया भी था, उन्होंने दिखाया भी नहीं एड में, ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा टाइम चले गए, तो वो चीजें है। So it takes you about between a week to 2 to 3 weeks to do one job. And and how much do you quote people? Or normally, or it depends on the if it depends on the it depends on the project. कोई हेलमेट रहेगा तो 4-5,000 से स्टार्ट होएगा, और अगर कोई कॉस्ट्यूम है, नॉर्मल सुपर कॉस्ट्यूम है, तो 15,000 से लेके 20, 25, 30 तक जाता है। डिपेंड्स उसमें कितना वर्क जा रहा है, एंड जनरली व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू पुट मोर वर्क जो कि रिक्वायर्ड, like in the astronaut there are many details which is replicating the real one. If you see other commercials, I know a lot of people don't pay attention to astronaut suits in advertisements, but if you look at other ads जिसमें बाकी astronaut very basic glove normal कपड़ा कुछ भी पहन दिए, कुछ भी बना दिए, the core is कि हाँ कस्टमर ने समझ गया ना एस्ट्रोनॉट है तो वो ठीक है, but I was like I'll put in more detail because मेरे को पसंद है और भी to go in more, and as I told you work speaks for itself. तो आप इतना अच्छा काम करोगे तो फिर आपको फोन आएगा, फिर पीपल विल कम इन यू, उसका एस्ट्रोनॉट ज्यादा बेटर था, इवन इफ इट थोड़ा ज्यादा काम चले गया मेरा, बट आई विल पुट इन मोर एफर्ट। 3D प्रिंटेड पार्ट्स यूज किया मैंने उसमें, देयर आर सर्टेन पार्ट्स इन द हेलमेट जहाँ पर ब्रीथ नहीं होता है, तो उसके लिए मैं स्पेशल गैप बनाया था, वेंट बनाया था, वेंट है, देन आई पुट 3D प्रिंटेड उसका जो एयरलॉक बनाया था, देन buckles were also 3D printed. There was a button, there was a gauge in the hand that was made, वो मैंने बनाया था हाथ से। तो ये सब डिटेल दिखता ही नहीं है एड में, दिखेगा भी नहीं और कोई देखेगा भी नहीं, बट आई वांट टू डू इट बिकॉज़ आई एम वेरी I've touched a lot of things too deep. There's another question which I missed. I was going through your Instagram and realized that I clicked a picture of a Ghost Rider motorcycle you made in Comic Con 2015. Could you tell us how you made it and show it if possible? I don't have the motorcycle right now. It's deassembled and gone. It's chori ho gaya actually. So that was a very bold decision I did back in 2015. That time the global championship was starting, and जो अच्छा बनाएगा इंडिया में उसको बाहर जाने मिलेगा। So I was like कि बनाना है, and I was like I was more of a Marvel guy. Okay, पहले से Marvel guy. DC इतना नहीं था मैं, but अभी मैं DC ज्यादा हूँ Marvel से ज्यादा, because Marvel अभी पूरा अजीब हो गया है in movies. So I was, and Ghost Rider is also one of my favorite cartoons, and not because of now or because of Nicolas Cage, because of Fox Kids again. तभी भी शो आता था, if you आपने देखा होगा शायद से, Ghost Rider आता था, Fantastic Four आता था, Silver Surfer आता था. So these comics, इसका भी मैंने comics बहुत collect किया था, मुझे पसंद था, and I wanted to make Ghost Rider, and since it was for a competition, and in a cosplay competition, in a costume competition, आपके कॉस्ट्यूम में काम होना चाहिए, यू हैव टू शो समथिंग इन योर कॉस्ट्यूम कि आपने देखो ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। पर इन गोस्ट राइडर कॉस्ट्यूम, अपार्ट फ्रॉम द स्कल, बाकी तो सिर्फ बाइकर जैकेट है उसका, है ना, ही इज जस्ट वेयरिंग अ बाइकर सूट, इट्स वेरी सिंपल। कहते हैं यार ये सूट बना के मैं आई वोंट बी एबल टू विन, लाइक व्हाट इफ आई मेड द बाइक, मैं फिर पागल हो गया क्या, इतना बड़ा बाइक कैसे बनाएगा, हां बाइक तो बन सोचा मैं, देन आई लाइक, एंड कॉमिक कॉन का ऐसा रूल नहीं है, बस आई वाज लाइक यू कैन नॉट यूज मेटल things because metal is sharp and it can hurt someone, like okay metal से नहीं बनाना है तो I cannot make an actual metal, because, and even if I make a metal one then वो तो मैं नहीं बनाऊंगा, a welder will make, so technically I'm not making it, and that is one clause in a competition where the cosplayer has to make everything by himself or herself only, उसके हिसाब से बनना चाहिए, you cannot buy things out from shop and say ये मैंने बनाया, in a costume competition, right, it beats the whole purpose there. तो मैंने डिसाइड किया कि बनाना है, एंड honestly I'll tell you, if I was not getting in this time, I would have gone in motorcycle building only. I was very much fascinated in making motorcycles. Again, back in the day, आपको पता होगा
on Travel and Living, Orange County used to come, Orange County choppers. जिसका meme आता है, there's this old guy with a finger like this shouting. देखा होगा आपने meme, है ना? Do you know Orange County? I know choppers, yes. देखा है ना आपने वो? हाँ, तो वो उसका ये meme है वो. So there, जब मैंने वहां पर देखा, वो लोग वाओ, ये लोग ने कैसा बाइक बनाया यार, and यहाँ पर ऐसे बाइक है ही नहीं. I was like very much interested into making that, but मैं तब तक कॉलेज में आ चुका था. यार साइंस लिया होता है यार, शिट मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहिए था यार, मेरे को बनाने का ये. But that was also back of in my mind कि मेरे को मोटरसाइकिल बनाना है. I was like कि चलो अभी finally I'll make the Ghost Rider, and I designed the whole Ghost Rider on my 3D model बनाया उसका मैंने. And instead of using metal, I used PVC pipes. That entire frame is made out of PVC pipes. And PVC पे में बहुत types होते हैं, which I learned that time. It's called something called UPVC, CPVC. जो आपका पानी का टंकी, water tank पे जो pipe होता है white color का, that is a more thicker pipe. The black one is your electric pipe. It is very thin. वो आप हाथ से तोड़ सकते हो. So I need a sturdier pipe. तो मैंने UPVC या CPVC लिया. उसका frame में और मेरे डैडी ने मिलके बनाया, जोड़ा वोड़ा. फिर the entire tank and all. Your dad helped you. He financed it also. तो उसमें भी surprisingly 30,000 के ऊपर खर्चा हुआ उसके ऊपर. Because उसमें इतना R&D गया. The pipes I had to buy again because मेरा frame बनाने के बाद it was not join नहीं हो पा रहा था. Because metal होता तो मैं weld कर देता easily, but pipe में तो I have to connect. So each length has to be precise. ऐसा वो करने में काफी चले गया. Printouts. Then घर में ही in my hall only I made the frame. Then I think okay tire किससे बनाएंगे? There's a tire. I cannot use actual tire or actual the rim. Rim भी I made it out of MDF wood, which is your discarded sawdust. उसका wood बनता है, उसका MDF board बनता है. उसका ये made a wheel CNC में बनाया था कट करके. उसका एक frame बनाया. Basic carpenter के पास गया, बस 2 wheels को मैंने join किया. I made the rim, and then the entire tire I made out of foam again. And that time I glued the tire with hot glue. Okay, hot glue से मैंने glue किया था. Tire का जो भी parts मैंने hot glue से glue किया था. And I assembled the whole bike. And in my design, that was supposed to be about 7 feet tall. Okay, 7 feet होना चाहिए था. But practically because the pipes were too thick and उसका hold couplers were too thick, मेरा bike बन गया कम से कम 11.5 feet tall. बहुत बड़ा बन गया था bike. And because of that, I had to scale the tires also. So normally the tires, chopper के जो tires होते हैं, 330 millimeters thick, बहुत बड़ा होता है. About 2 feet tall, 2 feet width tires होते हैं. My tire was more than that. उतना बड़ा चलो मैंने बना तो दिया. And this I took it to Hyderabad. Okay, I did it for all the. I took it to Hyderabad Comic Con. और मैंने क्या किया कि instead of me and my family went there. Instead of taking the parts inside and building it, I built it outside the venue. Assemble कर दिया और मैं बाइक को पुश करके लेके आ रहा हूँ. जब मैंने taking the bike inside, the security no, bike parking is from there. उधर जाओ. Then like नहीं ये competition के लिए. अरे नहीं बोला ना आपको वहाँ से जाओ, यहाँ पर मत आओ. बोला नहीं ये नकली है, देखो ये देखो. I pulled out the engine and देखो ये नकली है पूरा. Okay, take it in. So I was like I'll put an impact only कि भाई बाइक लेके आ गए कोई. So पूरा motorcycle I took it inside the venue and everyone was like why would you make a bike? Why would you do? I was like because Ghost Rider में कुछ था ही नहीं बनाने के लिए. The bike was the only thing I would have made. So I made the bike and I put it on the stage also. And people are इतना हल्का कैसा है ये? I was like this has to be like ये metal का होगा right? ये होगा. And that's how I won that competition. But the bike was too impractical. वहाँ पर मैं I won the Hyderabad competition, but जो main competition था वो मैं हार गया था. Because वो impractical था मेरे क्वेश्चन. So technically वो जीता नहीं था. But ठीक है. But that's how I made the motorcycle. And for the stolen part, after 2 years after that, in Mood Indigo IIT इधर जो IIT में जो फेस्ट होता है, वहाँ पर I had kept it for display. Display पे मैंने अपना मोटरसाइकिल रखा था, पूरा assembled. And in the venue, someone stole the tires. And outside, that tire has to be inside the premise only. वो किसी के रूम में, किसी के घर में वो अभी ना सोफा बन गया वो. I'm pretty sure because it cannot exit the IIT facility. So I had to. Joys of being in the hostel. But I'm glad to hear that colleges across India are the same, whether it's an IIT or not an IIT. It is an IIT with a
someone sitting on a tire and listen to phone calls maybe. The other question is, one reason people may be hesitant to work with the film industry is due to potentially irregular payments and shifting requirements and timelines. How was your experience? I have never faced. Now, before you comment on the film industry, do you want to comment on the film industry? I can. See, I think my experience. I never. I never think. And the thing is, this I think this happens with a lot of struggling actors because उनके बीच में ना mediators बहुत होते हैं. Cast people, then there's someone who's recommending. So I think उसके बीच में ऐसा problem होता है. But for the people who's working, the artists जो होते हैं ना, there's a thing called union. Every चीज का union होता है. Taxi union होता है. Then the rickshaw union होता है. Then carpenters union होता है. So there is a lot of union that works also in the film industry. So you cannot mess with a particular craftsman or tailor, right? You cannot mess with him. You cannot not pay him. अगर आप नहीं करोगे ना, वो यूनियन में कांटेक्ट करेगा और आपका प्रोडक्शन बंद करा देगा. And it can do. They can do it. It is supported by the government. You cannot not pay your laborers and everyone. You have to pay them. Okay? So it is very strict in that manner. And in my scenario, I was always working with stylists and production people. So I was always clear कि मैं whenever I'm making, मैं 50% पे ही काम करता हूँ. 50% before work and 50% after work. And generally 1 week से 15-20 days के बीच में आ जाता है. And आ ही जाता है. मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है. I've never faced कि कोई भाग गया है लेकिन because I am in the industry. मैं आ गया अभी. तो मैं मतलब people know me already. तो वो जो आदमी जो मेरे को काम भी जो someone who is contacting me, वो वापस से काम कराएगा किसी और से. अगर वो मेरे से नहीं कराएगा तो किसी से कराएगा ही कराएगा. तो अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो blacklist हो जाएगा. तो it's strict in the film industry. Yes, it is strict because no producer wants कि उसका नाम खराब हो. नहीं तो वो नहीं कर पाता. तो ऐसा नहीं होता है इधर. मेरे एक्सपीरियंस में have you tried any electronics integrated with costumes? How can we overcome the challenge of waterproofing and ventilation inside the costume? Yeah. अभी on my post only you can see मैंने Instagram पे डाला है collar bomb and the HP goggles. Yes, so yes. Yeah. Megha, can you share the link of the collar bomb thing? I think it's in his Insta stories. I'm not pulling it up. We're just putting the link for people to see here. Yep. So technically, जो भी lights, what we use, the simple LED lights that we use on our costume, they work on very small amount of electric current, 2, 3, 4 volts, 9 volts, उससे ज़्यादा नहीं. और वो आपको शॉक नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, ओके. और वो एंड वाटर डैमेज भी नहीं होता है टेक्निकली क्योंकि इट्स वेरी स्मॉल सर्किट बकेट है ही नहीं, तो कुछ वाटर डैमेज होगा नहीं अनलेस एक सर्किट बोर्ड है. इन द कॉलर बॉम्ब आप देखोगे ना उसमें एक टाइमर है. सो दैट टाइमर वाज प्रोग्राम्ड ऑन आर्डिनो जिसमें देयर इज अ फेक बॉम्ब बनाया है और उसका एक 1 आवर का टाइमर है. पासवर्ड डालेंगे, जैसे पासवर्ड एक्चुअली कीपैड डाला है, कीपैड में पासवर्ड इनपुट करना है 4 डिजिट पासवर्ड and there are separate 4 bombs in it. So हर bomb का 4 indicators LED lights है, green lights. So when you diffuse one bomb, the green red light will go green. You have to diffuse all 4. So ये पूरा प्रोग्राम इसका बनाना पड़ा. So हमारे टीम में अभी एक प्रोग्रामर भी है, so उसे हमने पूरा ब्रीफ लिया डायरेक्टर से and एक पूरा प्रोग्राम बनाया कि okay this password 1 2 3 4 डालेंगे तो बॉम्ब डिफ्यूज होगा, गलत पासवर्ड डालेंगे तो टिक 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 बॉम्ब फट जाएगा, तो वैसा वो ब्लिंक होगा. तो वैसा पूरा एक आर्टिफिशियल उसका सिस्टम बनाया. एंड द थिंग वाज it had to be remote controlled via Bluetooth app because in the shooting what if they want to show the last 10 seconds का चालू है और वो सीन बाद पे they have to retake the scene because maybe the actor को नहीं हो रहा है जो भी अलग-अलग शॉट लेना है. So वो timer again they have to put back to 10. So every time they cannot input on the keyboard on the actor. मोबाइल पे ऐप पे ही the director can change time. Okay 3 seconds 1 minute. तो उतना फ्रीडम के लिए एक ऐप भी बनाया एंड्रॉइड ऐप. That app can control the timer
and that's how it was infused. बना दिया था, and that board is not waterproof. वो पानी लगे तो उड़ जाएगा, but करंट नहीं लगता इसमें कुछ भी. लेस देन 9-10 वोल्ट्स का करंट चलता है, तो इट इज नॉट इवन, आपको फील भी नहीं होगा. And who does the Arduino programming and who makes the app for you? तो ऐसे इंजन, लाइक आई हैव पीपल जो ऐसा मोबाइल ऐप बनाते हैं, तो ये तो एक ऐप बनाना है, तो उसको कांटेक्ट किया. देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई नो, तो वो लोग बना के देते हैं. उनको बोला कि ये ब्रीफ है, ऐसा ऐसा करना है, बना दिया. एंड one surprising thing about that bomb project was, जब मैंने इंटरनेट बॉम्ब बनाया, even if it is a fake one, public में if you will take it out, it's a real one, right? To public it is a real one, right? So the challenge was, this movie was shot in कश्मीर या उधर शूट हुआ है, उधर रियल, हाँ वही लोकेशन पे शूट हुआ है. So the thing is कि उनको बॉम्ब है ना पार्ट्स में चाहिए, बिकॉज even if it is a prop bomb, आप उसको प्लेन में नहीं लेकर जा सकते, not even in train. You can't even take a prop bomb in a plane or a train. तो entire film product जो था, उनको एक बोलेरो जीप गाड़ी जो है ना, 12 days from Mumbai to there they had to go in a car. I had made two of them, 2 copies था. one was with the electronics and one was without electronics. वो पूरा गाड़ी में गए, और उनके साथ सारे मतलब the creative people sitting in case चेक नाका पे चेक होता है, and they have to check, show कि भाई ये नकली है, शूटिंग का ये सब कुछ they have to show, because यहाँ पर you cannot, even if it's a gun, even if it's a real looking gun, even if it's a plastic, you cannot take it on plane, नहीं लेगा. तो ये बड़ा challenge था for them to go via land route. So it was funny, but I was not on the shooting because इसमें simple बना के दिया था मैंने. And the recent project I have made a scalar का app. I posted the wristbands that I've shown. Mega has just shared the wristband one there. I can show you one I have over here. This is a very simple prop that I made. This ad is based on what's that Korean show called? I forgot what it's called. Korean show. Suicide. No, what's it called? Someone can probably help me out. Squid Games. Yeah. हाँ, ऐसी कुछ है. So the idea was here that these if you see that those people were kidnapped और उनको एक exam लिखना है, and they had 1 hour time, and each of them is wearing a electric band, and every time they answer right, it will show green, and if they answer a wrong question, वो red हो जाएगा. तो red हो जाएगा. तो ये बना के दिया था. So 15 I made pieces. And this one was a manual one. इसको manual दिया है, बैटरी manual है. ये उसके pocket में जाता है, शर्ट के थ्रू जाता है, और ये manual था. But the one which is blinking in the ad, वो Bluetooth controlled है. उसके लिए again I made an app that was given to the director, but the director was like तू ही कर. So I was only operating in the ad. मैं ही जैसे बोला कि हाँ blink, तो blink करती, वो blink दबा दिया और blink होता रहेगा. कि wrong answer, तो it was blinking like this. तो ये तो मैं handle कर रहा हूँ. तो वैसा बनाया था, and was very simple. बना के दिया था मैंने. तो या इसमें करंट नहीं लगता है. दिस इज अगेन एलईडी स्ट्रिप्स आर वाटरप्रूफ ओनली, वाटरप्रूफ ही रहता है. पानी एक बार सूख गया तो वो काम करेगा, बिकॉज द सर्किट इज सो स्मॉल. इसमें नहीं होता. बड़ा जो होता है ना, लाइक आवर मोबाइल इज टू कॉम्प्लेक्स, देयर आर मेनी थिंग्स इन अ मोबाइल, तो मोबाइल खराब हो जाएगा. बट ये नहीं होगा खराब, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं. इतना जस्ट अ सिंपल लाइट एंड अ रजिस्टर, तो वो नहीं होता है खराब. Let me see if there's if there are more questions. Okay, so where do you go from here? What have you thought about
Do you want to go to the US and work there? Do you want to continue working here? Do you want to, where do you see this going? Or it's, I mean, you are taking it as it comes? I'm definitely don't want to go to US क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने बना दिया है तो यहाँ ही पे करना है because यहाँ पर कोई है नहीं यहाँ पर lot of people are doing this so let's do this first year इंडिया में करते हैं and let's make in India जैसा कुछ support if I can do something for that I definitely want to तो ये तो करना ही है यहाँ पे मेरे को and so far the progress is good अगर if I make more if I make keep on making more definitely यहाँ पर एक scale बन जाएगा because people are asking me like मेरे को लोग पूछते रहते हैं कि ये चलता है क्या I want to work my son would like to work a lot of parents have also approached me तो उनके बच्चे स्कूल में हैं and they're like ready कि तुम करते हो ये कर सकते हो क्या आगे भी हाँ कर सकते हैं तो ऐसे मतलब मजाक किया था क्या चलो अगर जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तब तुम वहाँ चले तो मैं आपके पास भेज दूंगी तभी हाँ भेज देना मैं रहूंगा तो आई थिंक इट इज सस्टेनिंग एंड हो जाएगा आई थिंक मुझे उतना मुझे आई ऑलवेज हैड कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ कि इफ आई एम डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं करता हूँ तो हो जाता है इवेंचुअली And उतना विल पावर are you looking to expand your team? I mean, right now you have freelancers and others you are working with. Are you looking to expand your own team? Yes, eventually, yeah, this should become a big team of experts जहाँ पे सब कुछ है start to end of कोई भी आदमी आएगा कोई कैरेक्टर क्रिएशन का प्रॉब्लम लेके तो उसके पास सारे चीज होने चाहिए तो इवेंचुअली तो yes that's the plan अभी तो मुझे 1 साल ही हुआ आयरन कट स्टूडियो को 1 साल हो गया तो 5 years में तो हाँ कर देना है हो जाएगा I think and if someone wants to reach you either for a project or to come and work with you, how do they reach you? They can contact me on my Instagram, Facebook पे तो मैं हुई our page is there so you can contact and I'm from Mumbai में हमारा स्टूडियो है in Goregaon West this is next to Film City only sorry Film City का थोड़ा दूर है 15-20 minutes Filmistan is near to us Filmistan is also a studio so someone wants to come here and see आ सकता है and you're looking to hire some interns. You already hired an intern right now एक मुझे मिल गया है एक और एक वैकेंसी है मेरे पास तो who is interested in making props costumes जिसको पसंद है and the best part is और जैसा every time I'm making something new now ये मैंने कभी नहीं बनाया था this is a kabuto mask ये मैं first time बना रहा हूँ and because of this project I was so inspired I made one more for myself only क्योंकि मैं बना के दे दूंगा तो मैंने मुझे भी चाहिए एक तो आई लाइक मैं 2 बनाता हूँ आई मेक लंच तो that's the beauty कि every time the work is different new monotonous नहीं project कुछ भी आएगा कभी भी I've already got so many requests कि एक को monster चाहिए एक को dinosaur चाहिए एक को Iron Man चाहिए किसी को कुछ so it's always new that's the beauty of this kind of work कि हर टाइम नया होता है so it's always learning and through that I get to learn the actual thing also मतलब which is obviously useful नहीं है but एक insight मिलता है which I told you for the astronaut उसमें fabric steel का होता है ना तो ऐसा that's also you come to know because every day you keep on learning something new तो वो भी एक अच्छा aspect है मुझे सीखने में for those in the audience apparently the astronaut's glove material is not fabric it is steel it is thin strands of steel that are woven onto the front of the glove the entire Apollo gloves का जो fabric है वो अभी भी screenshot होगा can you show just write in Apollo glove देख लो okay I'll leave it to Megha Megha can Google Apollo glove and find Apollo so that is color and technique in real that is not fabric वो उसका जो threads है it's super minute thin steel so literally like hundreds of steel wires का एक strand of thread बना है और वैसे
इतना thousands of threads है. हाँ, this the हाँ yeah the first two yeah. That gray part, that is steel. That is not fabric. That's so cool. तो अभी ये हमको पता है कि ओके चलो ऐसा है, तो नाउ आई हैव टू लुक एट दैट इज रिफ्लेक्टिव आल्सो एंड आल्सो फैब्रिक, बिकॉज़ अब मैं स्टील तो नहीं यूज कर सकता, बट एटलीस्ट आई कैन फाइंड इन द फैब्रिक फील्ड ना इतने तरह के फैब्रिक्स ऑलरेडी बन चुके हैं कि आपको बनाने की जरूरत नहीं है. देयर इज ऐसा शाइनी मेटालिक फैब्रिक आता है, तो मे बी वी कैन फाइंड समथिंग लाइक दैट व्हिच रेप्लिकेट्स दिस, तो वो इजी हो जाता है व्हेन वी नो कि मटेरियल क्या है और उसका, बिकॉज़ इन टेक्निकली इन द एड फील्ड, इन द शूटिंग फील्ड, एवरीथिंग हैज टू बी रिवॉल्व अराउंड लाइटिंग. आपका जो भी आइटम रहेगा ना वो मोस्टली शुड बी मैट फिनिश होना चाहिए, मैट या फिर नॉन रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज जितना नॉन रिफ्लेक्टिव होगा ना उतना इजीली कैमरा में अच्छे से वो चीज आता है. जिसको हाईलाइट करना है उसको वो लोग दिखा सकते हैं. दैट वे इफ यू नोटिस इन अ लॉट ऑफ एड्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन मैट. शाइनी नहीं होता, शाइनी होता है कुछ कुछ में, बट उस टाइम पे वो अलग, वो लाइटिंग वाइटिंग बीएफएक्स खर्चा बढ़ जाता है, और जितना लाइट कम रहेगा ना उतना बेटर होता है. तो हमारे एस्ट्रोनॉट का भी द टोन इज ऑल मैट, टोन डाउन करना पड़ता है, रिफ्लेक्टिव नहीं रखना था, क्योंकि फिर उस लाइट जो करता है फिर वो एडिटिंग में प्रॉब्लम होता है, बहुत चीजें होते हैं. दिस आल्सो आई लर्न बिकॉज ऑफ व्हेन आई केम इन द फील्ड कि ओके मेरे को भी कलर भी ऐसा करना है जो ज्यादा लाइट ना बाउंस करे, इफ दैट रिक्वायरमेंट इज देयर. So this is a new aspect. And what is your, are you coming for the next Comic Con? There's one more, Comic Con hopefully, मतलब I think Comic Con होने वाला है. Comic Con क्या major events are gonna happen this year, so I'll try to be if not all the cons, Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, these 4 cities it happens, so at least one तो I'll be there. कोई भी मैं पहले बता दूंगा मैं किधर जा रहा हूँ. And for competition, I'm going for the competition again. I'm making a suit. मैं बता दूंगा चाहिए तो. You're already preparing for the Comic Con competition this year, huh? Yeah, I'm making this one. What is this? The Crisis game एक PC game है, उसका सूट है, नैनो सूट. तो this figure just for reference मैंने यूएस से इंपोर्ट करा है, तो मुझे इधर इट इज नॉट अवेलेबल हियर. सो आई आल्सो कलेक्ट टॉयज, तो मेरे को अच्छा लगता है तो फिगर्स वगैरह कलेक्ट करना, तो मैंने लिया है. इसका भी आई एम मेकिंग, अभी आई एम बेसिकली इसका ब्लूप्रिंट्स आई एम मेकिंग द ब्लूप्रिंट्स ऑन पीसी एंड स्टडीइंग द मटेरियल्स कि कैसे बनाए गए, तो व्हाट शुड आई यूज, बिकॉज़ कंपटीशन तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होगा. सो आई हैव ऑलरेडी प्लान कि कैसे करना है, बिकॉज़ बिलीव इट और नॉट जो बाहर के जो कंपटीशन होते हैं वहां पर पीपल स्टार्ट 1 year प्रायर, जस्ट लाइक बॉडी बिल्डिंग. 1 year पहले ही वो जिम में शुरू हो जाएगा, है ना, 1 महीने पहले नहीं होता. तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि वो पहले से ही पीपल स्टार्ट रिसर्चिंग, बिकॉज आई डिसाइडेड कि मैं चलो बनाऊंगा इसको इन लेदर, बट लेदर बना नहीं बन रहा. मे बी आई हैव टू यूज अनदर मेथड, बिकॉज टाइम मेरे पास है ना टू एक्सपेरिमेंट मोर. तो वो चीज है कि अभी हम एक्सपेरिमेंटिंग, बिकॉज ये मेरे को बनाना है. दिस इज माय फेवरेट कैरेक्टर, मेरे को बहुत पसंद है मेरे को कैरेक्टर, तो देखते हैं अगर बन गया तो बहुत मजा आ जाएगा. तो एक क्वेश्चन किसी ने लिखा, कॉपीराइट क्वेश्चन. Do you have any copyright issues in commercial activity? No, Like, because will NASA come to you and say, hey, why are you using an Apollo suit for selling candy? for conglomerates, वही होता है ना conglomerates, and for big multi unicorn companies जो होता है ना, these kind of people को फर्क नहीं पड़ता है. On a small scale people like us imitating their work, इनके लिए वो free advertising हो जाता है. It's free advertising for them. Even for cosplayers, Marvel DC does not strike you because of you, because of us. they like कि भाई ये लोग मोटिवेट हो रहे हैं हमारे वर्क से, तो दे विल लाइक हाँ भाई करो, बिंदास करो. इफ वी मोनेटाइज ऑन इट then maybe they will do it, but ऐसा technically in the name of cosplay भी नहीं होता. and copyright तब होता है जब आपका प्रोडक्ट इतने क्लॉज आ सके, इज 100% आइडेंटिकल. दैट इज व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ आइडेंटिकल फोन. आईफोन का कॉपी कितना करता है ये तुम्हारा, कौन सा फोन है, Xiaomi ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बनाता है ना, बट बटन प्लेसमेंट ऊपर नीचे करता है. इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन विल स्ट्राइक. आईफोन ने हाँ करना कॉपी, बिकॉज करना बिंदास कर. तो ऐसा चीज है, दे वोंट स्ट्राइक एनीथिंग ऑन यू.
ऐसा तो हुआ नहीं अभी। हाँ अभी तो मैं जैसा मैंने आयरन मैन बनाया है, तो आयरन मैन पे कभी भी ऐसा कभी हुआ नहीं, बिकॉज दे वांट, मार्वल वांट्स यू टू मेक, वांट्स अदर पीपल टू मेक, भाई उससे उनको ही फायदा होता है। तो आयरन मैन तुम्हारे वजह से उनको रीच मिलता है। तो अभी फॉर माय प्लस आल्सो आई एम मेकिंग पेपर पॉट्स, जो उसका आर्मर है एंड गेम। You're making what? आपने एंड गेम देखा है? एंड नहीं गेम, यार, I'm sorry. I'm not a very big superhero fan. बट यू हैव सीन द मूवी राइट? टोनी स्टार्क, उसकी जो Absolutely, गर्ल, yeah. I mean, I have basic proficiency in superheroes. शी आल्सो वेयर्स अ ब्लू सूट, ब्लू आयरन मैन सूट, तो आई एम मेकिंग Okay. दैट आल्सो। तो हाँ वो भी बनाए, वो भी है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्राइक कॉपी स्ट्राइक नहीं करता है कोई। Nice. Cool, yeah. I think, I mean, of course, we had issues in the beginning. That's why we couldn't cover all topics. But I've asked whatever I wanted to ask, and I think we've answered the audience questions. One question I wanted to ask you is, T-Works may we have metalworking, woodworking, ceramics, electronics, 3D printing, so on and so forth. Um, in a prototyping center like this, do you think there is a specific section that artists like you would like to use? Yes, 3D printers, then silicon, then a lot of fibers, बहुत तरह का प्लास्टिक मटेरियल, कंपोजिट्स है, ये सब बहुत काम आता है, बिकॉज इन द शूटिंग prop making line they work on a lot of polymers only. मेटल भी होता है, if you see specifically, if you see the Dark Knight, उसका जो पूरा उनका तो यार फॉर द बैटमोबाइल स्पेसिफिकली, इफ यू सी द टम्बलर, जो भी टम्बलर जो तुम्हारा डार्क नाइट क्रिस्टोफर नोलन वाला है, उनका पहले से भी बाकी बैटमोबाइल थी, उनका पूरा R&D, दे हायर अ प्रॉपर कार मेकर, उनको पूरा बना के कार बनाया। कि इन द डार्क नाइट मूवी उनका पर्पस क्या था? द कार, द बैटमोबाइल इज अ कार दैट कैन जंप थ्रू अ माउंटेन टू अनदर माउंटेन, so they wanted to make a car which can actually jump, maybe थोड़ा सा, तो उन्होंने प्रैक्टिकली गाड़ी बनाया, तो थोड़ा सा जम करते हैं इन द मूवी, उनको थोड़ा एग्जैजरेट कर देंगे, तो उतना R&D किया, उतना वो करा, तो ऑब्वियसली समवन वांट्स टू मेक अ कार इन अ मूवी, तो हाँ पीपल जो है कार एक्सपर्ट आ सकता है। एंड बाइक बनाने वाले भी है, जैसे यहाँ पर मुंबई में जैसे वर्जेंसी मोटरसाइकिल्स, वर्जेंसी बोल के एक नाम है मोटरसाइकिल, दे मेक कस्टम मोटरसाइकिल एंड दे मेक चॉपर्स जस्ट लाइक ऑरेंज काउंटी चॉपर्स बैक इन यूएसए, ऐसे बनाते हैं इंडिया में, दे ऑल्सो मेक। और दे गॉट अ मूवी ऑल्सो, ओ माई गॉड मूवी, अक्षय कुमार, Yeah. मोटरसाइकिल जो चला रहा है, दैट इज रॉयल एनफील्ड, मॉडिफाइड रॉयल एनफील्ड, वो इन्होंने ही बनाया, तो दे गॉट अ चांस इन मूवी, तो समाव जो डायरेक्टर ने दिया ना उनको काम, उनका आया मूवी में। तो वैसे ही कि अगर कोई बनाएगा तो वही ना कि रिक्वायर पीपल आर देयर, यू जस्ट हैव टू आस्क, दिस पीपल जस्ट हैव टू आस्क, यू हैव टू लुक अराउंड, क्योंकि लोग तो है करने वाले। I think the next, let's see if the next Comic Con Hyderabad can be at T-Works. I think that'd be very interesting. डिड यू हैव टॉक, आपने बात की? नहीं, not yet. अभी करूँगा. Let's see. I mean, I think that'd be interesting to make the prop there and to use the costume at Comic Con at our space. नहीं, डू इट, क्योंकि फिर मैं तो आऊंगा हैदराबाद, तो आना ही पड़ेगा मुझे। At least for that we should do it. Huh? हाँ बिल्कुल। Nice. So thanks so much, Jeet. I hope you had dinner. There's a kid behind you. This is the kid who are the robo boy. Okay. Nice, fantastic. पानी पी के चले जाते, पानी खत्म हो गया। But nice, and okay, and thanks so much. I hope you had your dinner. काफी late हो गया वैसे. And hope. See the number, 12 Sorry? people. I hope you. Yeah. Sorry. Can you come again? Any of you have any question, you can definitely inbox in DM on my Instagram and Studio page only, because Yeah. and if you learn सीखना है already, you can just type in cosplay, YouTube पे जाओ, इतने वीडियोस है यार बाहर के लोगों का, इंडिया का भी है। आपको cosplay के बारे में जानना है तो there's a Facebook group, Indian cosplay community, like people like me, there are 4,000 cosplayers in India. Wow. Not exactly,
2000 बाकी 2000 में भी ये हो गए एस्पिरेंट्स हो गए तो वो there's a group of 5000 people actually 5000 people फेसबुक ग्रुप है इंडिया का मुंबई दिल्ली बैंगलोर चेन्नई हैदराबाद small cities everywhere are there and they lot make a lot of costume prop ही बनाते रहते हैं अलग अलग चीजें के for Halloween for Comic Con मूवीज सीरीज बहुत बनाते हैं तो आपको इंटरेस्टेड है तो आप ग्रुप ज्वाइन करो एंड अपना इंडियन कॉस्प्ले कम्युनिटी वहां पर जाइए तो बाकी तो आपको बहुत मिल जाएगा फेसबुक पर ग्रुप्स आई एम ऑन अ लॉट ऑफ फेसबुक ग्रुप्स खाली कॉस्प्ले जस्ट टाइप इन कॉस्प्ले एंड गो टू द ग्रुप सेक्शन देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रुप्स इन अदर कंट्रीज आल्सो इंडिया का भी है तो वहां पर बहुत सारे प्रॉप मेकर कॉस्ट्यूम मेकर बहुत है बाहर के इंस्पिरेशन मिल जाएगा आपको बनाने के लिए पीपल मेक मूवीज के लिए स्पेसिफिकली लोग बनाते ही रहते हैं तो अभी आई सॉ द यू सॉ बैटमैन देखा आपने बैटमैन देखिए हाँ क्रिस्टोफर नोलन वाली नो दिस क्रिस्टोफर ये अपना मैट रीव्स वाला नया वाला न्यू बैटमैन आई हैवंट 4 दिन पहले नहीं देखिए सॉरी यार आई मीन नेक्स्ट टाइम आई विल वॉच ऑल दीस मूवीज एंड कम देख लो ये अपना रॉबर्ट पैटिसन ट्वाइलाइट का एक्टर देखा नहीं उसका ट्रेलर तो देखा होगा ना हाँ just see the movie it's brilliant it's the most realistic Batman मतलब अगर रियल वर्ल्ड में कोई बैटमैन बनेगा ना तो वो दैट्स द क्लोजेस्ट बैटमैन बन सकता है रियल एवरीथिंग इज रियल मतलब कुछ भी चीज साइंस फिक्शन या कुछ भी चीज फिक्शन पे नहीं है गन शॉट्स कॉस्ट्यूम बैकग्राउंड द बैटमोबाइल प्रैक्टिकल इट्स ऑल रियल like Dark Knight. I've read an article about this on CNN when I was doing research for this talk. This Batman suit is the most realistic Batman suit ever made. Exactly. If you notice Batman का जो belt है, the utility belt, it's yellow. When in reality अगर आपका पूरा suit stealth है, and stealth means everything should be hidden. Why would your belt be yellow and bright glowing? Sense नहीं बनता. Comic में sense बनता है. तो रियल वर्ल्ड में तो सेंस नहीं बनेगा अगर आप स्टेल्थ सूट है तो आपका बैक बेल्ट भी तो ब्लैक होना चाहिए ना तो इधर भी उसका ब्लैक इट्स हिडन उसका गैप इज आल्सो यार आप देखो मूवी दिस एंड नाउ आई एम थिंकिंग टू मेक दैट सूट पहले मेरे को थोड़ा आई वाज नॉट कीन ऑन इट बिकॉज़ फॉर टेक्निकली फॉर बैटमैन सो इसमें बल्की गाय लाइक बैन एफलेक बट दिस इज माय एंटायर व्यू so now I'm going to make the Batman suit also hopefully मैं कॉमिक कॉन लेके जाऊंगा वो एंड दिस नैनो सूट ये दो मेरे टारगेट्स हैं इस साल के this Batman and this suit I'll make fantastic yaar and I think all the best we'll cheer for you when you come to Hyderabad yes. for the competition and that's all from my side thanks Jeet again and we'll see you at T-Works sometime yes definitely I'll come chalo good night man bye